फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? एक मिनट। एक्चुअली मेरा टेक्नीशियन आज आया नहीं। चलिए, आवाज आ रही है? नमिता जी, आवाज आ रही है? बता रही तो स्टार्ट करो। जल्दी मैसेज कर दिया। गुड इवनिंग रोहित जी। स्लो है। एक्चुअली दूर है ना, अभी डिक्टेशन स्टार्ट हो। अब देखिए। हाँ, तो शायद ही सही कहा है। चलिए, पहले ट्राई लिख लीजिए। हमको आज अकेले बनाना पड़ रहा है। चलिए, ट्राई स्टार्ट। The other day, my honorable friend, Mr. Krishnamachari, whom I regard as a great economist and who knows finance, etc., and looks to the interests of the country and gives very good advice, said that we do not want to go to medieval age and the luxury of yesterday is the necessity of today, and that few articles which we import
today from many foreign countries and the few industries which we are starting for recreation and amenities stop. बताइए तुषार जी. ठीक है. अतुल जी आप अब ठीक है डिक्टेशन में. चलिए. चलिए स्टार्ट. Mr. Deputy Speaker, sir, may I, with your permission, intervene and say a few words in regard to the various matters that have been discussed. My colleague, the finance minister who is in charge of this particular budget, will no doubt deal with the specific matters that have been raised in the course of this debate. I need hardly remind the House of the fact that although this budget is the individual responsibility of the finance minister, it is also the responsibility of the entire government, and as Prime Minister, I am entirely responsible for it as well as any other member of the government. This budget was placed before the House after the usual consideration by the government, and the latter is completely committed to it. That does not mean that we are not willing to consider any new proposals. We certainly are, so long as the basic structure of the budget is not affected. My friend, the Honorable Professor Shah, pointed out various difficulties in the way of a debate here and in the way of consideration of the budget proposals. He pointed out how little could be done in the allotted time. I am in complete agreement with him in this matter. If there are any practical proposals which would enable us to give more time for the consideration of these problems either formally or informally, I am quite sure that the finance minister will gladly consider them. The real difficulty is, however, more basic, and it is this. This kind of problems which the government has to face now is so vast and intricate that it is impossible for any democratic parliamentary assembly to give enough time for its consideration. It is just a question of time. This is not a new difficulty. I remember that long debates on this subject took place in a country like the United Kingdom, where they found that they could not get along with what is really the 19th century procedure in this 20th century of continuous crisis, social problems, and international problems. So even parliamentary procedure in the United Kingdom has gradually changed, and many matters are left more to the committees than to the House itself. Usually, a principle is decided by the House and its working out is left to committees. The House cannot find time to consider everything. That is a difficulty inherent in the situation.
Para. If we can find a remedy for it, it will not only be good for us, but maybe we will be setting an example for other democratically inclined countries who are seeking such remedies. In spite of continuous session, it is not able to find time to consider in detail all the important matters that come up. We have, in fact, much less time because we are not in continuous session. I suppose our sessions will inevitably become longer and longer so as to enable us to deal with more and more problems and have more and more discussions. Anyhow, I have stated what the difficulty is at present, though I am in sympathy with what Professor Shah said. I have no easy remedy for that difficulty, except today that we are perfectly prepared to consider together with the honorable members of the House any ideas or suggestions about how to give greater facilities for more intensive discussion of any great problem. As honorable member referred to the budget speech as being directly or indirectly a survey of all manner of problems, domestic, international, economic, foreign, etc. The House can hardly expect the Finance Minister's budget speech to be a survey of all these tremendous problems, although they have no doubt some bearing on the budget. The world is becoming far too intricate and difficult for us to be able to keep the full picture in view always. As I listened to the honorable member who spoke just now, I was wondering whether we had the larger picture in mind or were getting lost in few minor and secondary matters. For instance, having referred to the government's extravagance, the honorable member went on to say certain things in regard to our bringing forward a bill for giving a pension to the president. That signified to me an approach which I would call 100% wrong. Besides, I should have thought that the subject of pension for the president was hardly a matter for debate or reference here. I say, even if this country is starving, even then you have to provide for our president. The honorable member perhaps prefers starvation for the president and himself. I certainly will not stand in his way. But we are considering graver matters than this. And the fact that such points are raised shows that we are not looking at the problems. We do not seem to be thinking of the vast problems that we are faced with and have to wrestle with, the vast problems of the country's economy in relation to the world's economy. Stop. मैं पैसे डालना हूँ. सही तो चार्जिंग वॉइस. इसका ट्रांसक्रिप्शन बोलना है. स्पीड में इनका जी आपको मालूम ही है. स्पीड अराउंड 300 प्लस. 1
सेकंड कट हुई थी, अरे चलिए उतना तो हुई थी, नेटवर्क फ्लक्चुएट। देखिए मैंने डाल दिया, पूछ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन बता रहा हूँ, तो ही परेशान नहीं है। जी मेन कार्य मैंने खुद से किया। वो इसको पूछ लीजिए आउटलाइन, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन वैसे भी 8 बजे से स्टार्ट होना है। 15 मिनट है अभी आपके पास। केसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब मिक्स डिटेक्शन आती है एग्जाम में। तो मेनका जी आपको पैसेज मिला कि नहीं, कि आपको सेंड करूँ? 11 लोग अभी देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा फिर। एक्स्ट्रा वेजेंट रेस्टलर, अच्छा रेस्टलर रेस्टलर। आज बड़ा बनाऊंगा, कल छोटा दिख रहा था। एक्स्ट्रा वेजेंट, तीन बन सकती है। पहले बताइए, क्लियर दिख रहा है कि और बड़ा बना है? क्योंकि कल छोटा दिख रहा था। गुड इवनिंग गौरव जी। रेस्टलर रेस्टल, रेस्टलर रेस्टलर। डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। रेस्लर नहीं बना सकते, लेकिन ये स्टोरर जैसा है इसलिए इसको नहीं बनाइए। ये दिख रहा है, और पूछिए। अनुज जी क्या मैसेज कर रहे थे, नहीं जवाब पे। आठ पे डाल दो।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अरे मे अतुल जी ये मे भी वन वर्ड कहाँ देख लिया आपने? मे भी वन वर्ड नहीं होता है। नहीं भाई, ये साथ बतानी है अलग अलग बतानी है? जैसे आपको अलग अलग तो आती होगी। एक्स्ट्रा वेजेस बता दिया नविंद्र जी। ये है, जेंट्स आएगा तो बस लगा दीजिए ना। डायरेक्ट डायरेक्टली देख लिया। ये अच्छा पूछा है। दिया है तो जी, तो मिस प्रिंट हो सकता है वैसे, मे बी अगर बोला जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा वन वर्ड बोला गया कि अलग बोला गया। मेहम होता है वन वर्ड, हो सकता है मेहम स्पेलिंग तो नहीं है वो। आप मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। दिख रहा है पोर्टफोलियो। पोर्ट पोर्ट पोर्टफोलियो पहले आके होगा हुआ मैंने। एक आध दिक्कत होगी हमको भी, क्योंकि ब्लैक व्हाइट बोर्ड में आउटलाइन मैंने कॉपी आउटलाइन मैंने थोड़ा फर्क आया है। डेमोक्रेटिकली, स्टारवेशन, डेमोक्रेटिकली, स्टारवेशन ये लाइक नहीं आई है। ये हमारे आज एक सीनियर ने बताई थी, ये आउटलाइन आई थी स्टारवेशन। और कोई? इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड रिस्पेक्ट टू डिफरेंस, ये पूछा आपने। अब पूरा फैमिली बताएंगे हम इसकी। ये मिटा दें हम रेस्लर। पोर्टफोलियो नोट, देखिए नोट कर डालिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ काटा क्यों है? सपोर्ट का मतलब सपोर्ट करना। इस डैश ने इन रिस्पेक्ट आपको सपोर्ट किया है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू द, मैं द लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में करके। इस तरह स्पाइट ऑफ में होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द, सॉरी सॉरी सपोर्ट है ये मैं कहा छोटा बना दिया, मैं यहाँ बना देता हूँ। इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ दी, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ दी। खत्म हो गया, अब इनके कोई परिवार नहीं है। इन फैमिली, अब पूछिए। क्लियर दिख रहा है ना? 8 बजने वाले हैं।
चार्ली की और कोई वर्ड आपको होगा डाउट मेरे ख्याल से, अभी आप न्यू हो। बाकी तो नोट है वर्ड के पास, पूछ लीजिए। इन अकॉर्डेंस विद, सब फ्रीज है। इन अकॉर्डेंस विद, इन इन अकॉर्डेंस विद द, अब इसी में लॉ आ जाता है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ, विद द लॉ नहीं होगा, विद लॉ आएगा। सर्किस, एसके आर पी में इसका सर्किल। स्क्रप्चुअस, तो शायद आपको सारी आ रही आउटलाइन, भाई मैं पूछा हूँ इसमें कितनी आएगी। इस कन्वर्ट, इस पैसेज भेजा उसमें से आप लोग पूछ ही नहीं रहे। फाइनेंस मिनिस्टर वाला चीज बनाना नहीं है। अच्छा, तो जी वो वन वर्ड नहीं, वो टाइप वो है, अलग ही होगा यहाँ पे। मे बी वी विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल, अलग होगा मे बी। इन स्पाइट ऑफ द जस्ट में आया था। बजट स्पीच की आउटलाइन देखिए उसे बताया हुआ है, नोट कर लीजिए बजट स्पीच। इट बजट सर्किल से स्पीच हो जाएगा। लैपटॉप नहीं है पास में, तो आप लोग डाउट को डाल दें एग्जाम की तरह। स्मॉल ही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब लीगल का कॉल गया आप लोग अभी, इसमें डाल देना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए एक और बता दें तो जी की साइकोलॉजिकली स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम साथ में। अच्छा हरमीत, वॉइस कम आएगी, डिक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसे धीमे बोल ही रहा हूँ वैसे भी, क्योंकि अभी 9 बजे क्लास भी लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बता रहे थे करके साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली स्विफ्ट पेमेंट, शायद ही बताई हुई है स्विफ्ट पेमेंट, शायद नहीं है, सिस्टम आएगा ये, क्या हो जाएगा, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोल्म, स्टॉकहोल्म आने वाला है नहीं, मुझे इसकी आउटलाइन जो है ना, इसको आप लोग बल्कि समझाइए, स्टॉकहोल्म अलग, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंशुमन जी लीगल बता रहा हूँ, एक सेकेंड आपकी बता रहा था जी, कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं नहीं,
ट्यूटोरियल है। हाँ जी, तो मैं समझ गया, रीड एप्लीकेशन। तो ये मेरी बारी है, इसको अलग बनाइए आप। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और क्या है? चर्न एलिवेट कन्फर्म चर्न बता दें, वो पढ़े हैं। मछवाला डैश नहीं, इसमें कटेगा नहीं, मछवाला डैश लगा दीजिए। एलिवेट तो सिंपल है, एलिवेट और काउंटर। हो गया। चलिए लीगल लिखिए, क्योंकि 1500 वर्ड है लगभग। जी सिंपल, अच्छा सिंपल वाला बोले कि टफ वाला? एग्जाम दे के आए कल आप लोग, जनरल नहीं आएगा। बैठ के 2 मिनट ठीक है, छोड़ता है। हाँ हाँ जी, मैं कहीं सुनिए। ट्रांसक्रिप्शन पैसेज स्टार्ट होगा लगभग 8:15 तक चलेगा। फिर उसके बाद 1000 वर्ड है तो 35 मिनट्स। चलिए, हाँ 8:50 पे लिंक आएगी ग्रुप पे, उस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है। उसके बाद पैसेज मिलवाऊंगा, 10 मिनट मिलवा दूंगा। और एरर जो है सब लोग मुझे कमेंट कर देना इसी पे, या फिर टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके करिए, मैं स्टार्ट करूँ। फिर 9 बजे से क्लास अपनी रेगुलराइज चलेगी, सी पैसेज सॉरी डेली वाली। ठीक है, ओके। टाइमर चलिए स्टार्ट। The question that has come up for consideration in this appeal is whether the seller is entitled to forfeit the earnest money deposit where the sale of an immovable property falls through by reason of the fault or failure of the purchaser. Stop para. An agreement for sale of property bearing number 14/11, second floor, Punjabi Bagh, New Delhi was entered into between the appellant seller and the respondent purchaser on 29/11/2005 for a total consideration of rupee 70 lakh to be paid on or before 5/3/2006 and towards earnest money an amount of rupee 4 lakh was paid on 29/11/2005 and another rupee 3 lakh on 30/11/2005. That means altogether rupee 7 lakh was paid, being 10% of the total sale consideration. The purchaser, however, could not
pay the balance amount of rupee 63 lakh before 5/3/2006. Consequently, the sale deed could not be executed. Seller therefore did not return the earnest money to the purchaser stock. Consequently, the purchaser as plaintiff instituted a suit number 7640806 before the Additional District Judge, Delhi, for recovery of rupees 70 lakh from the seller, defendant of the earnest money paid by him. Defendant contested the suit, stating that as per the agreement he is entitled to forfeit the amount of earnest money. If there was a failure on the part of the purchaser plaintiff in paying the balance amount of rupee 63 lakh. The trial court dismissed the suit, holding that the defendant is entitled to retain the amount of earnest money since the plaintiff had failed to pay the balance amount of rupee 63 lakh before 5/3/2006. Aggrieved by the judgment of the Additional District Judge, Delhi, plaintiff took up the matter in appeal before the High Court of Delhi by filing RFA number 137 of 2010 stop. The High Court placing reliance on the judgment of this court in Fateh Chand versus Balkrishan Das, AIR 1963 SC 1405, took the view that the seller is entitled to forfeit only a nominal amount and not the entire amount of rupee 70 lakh. The High Court further held that the seller can forfeit an amount of rupee 50,000 out of the amount of rupee 7 lakh, and he is bound to refund the balance amount of rupee 6,50,000 to the purchaser. To this extent, a decree was also passed in favor of purchaser against the seller. It was also held that the purchaser is also entitled to interest at the rate 12% per annum from 29/11/2005 till the amount is paid. Aggrieved by the said judgment of the High Court, the seller has come up with this appeal. We have heard the learned counsel on either side at length. Facts are undisputed. The only question is whether the seller is entitled to retain the entire amount of rupee 7 lakh received towards earnest money or not. The fact that the purchaser was at fault in not paying the balance consideration of rupee 63 lakh is also not disputed. The question whether the seller can retain the entire amount of earnest money depends upon the terms of the agreement. Relevant clause of the agreement for sale dated 29/11/2005 is extracted hereunder for easy reference. If the prospective purchaser failed to fulfill the above condition, the transaction shall stand cancelled and earnest money will be forfeited. In case I fail to complete the transaction as stipulated above, the purchaser will get the double amount of the earnest money. In the both condition, dealer will get 4% commission from the faulty party. The clause therefore stipulates that if the purchaser fails to fulfill the conditions mentioned in the agreement, the transaction shall stand cancelled and earnest money will be forfeited. On the other hand, if the seller fails to complete the transaction, the purchaser would get double the amount of earnest money.
Indisputably, the purchaser failed to perform his part of the contract. Then the question is whether the seller can forfeit the entire earnest money. The question raised is no more res integra. In Kunwar Chiranjit Singh versus Har Swaroop AIR 1926 PC1, it has been held that the earnest money is part of the purchase price when the transaction goes forward, and it is forfeited when the transaction falls through by reason of the fault or failure of the purchaser. In Fateh Chand Supra, this court was interpreting the conditions of an agreement dated 21/3/1949. By that agreement, the plaintiff contracted to sell his rights in the land and the building to Seth Fateh Chand defendant. It was recited in the agreement that the plaintiff agreed to sell the building together with pattadari rights appertaining to the land and measuring 2433 square yards for rupee 1,12,500, and that rupee 1,000 was paid to him as earnest money at the time of the execution of the agreement. The conditions of the agreement were as follows. The extent shall deliver the actual possession, that is, complete vacant possession of Koti Bangla to the vendee on the 30th March 1949, and the vendee shall have to give another check for rupee 24,000 to me out of the sale price. Then the vendee shall have to get the sale deed registered by the 1st of June 1949. If on account of any reason the vendee fails to get the said sale deed registered by June 1949, then this sum of rupee 25,000 shall be deemed to be forfeited and the agreement cancelled. Moreover, the vendee shall have to deliver back the complete vacant possession of the Koti Bangla to me, the executed, if due to certain reason any delay takes place on my part in the registration of the sale deed by the 1st June 1949, then the executed shall be liable to pay a further sum of rupee 25,000 as damages apart from the aforesaid sum of rupee 25,000 to the vendee, and the bargain shall be deemed to be cancelled. Plaintiff on 25/3/1949 received rupee 24,000 and delivered possession of the building to and the land in his occupation to the defendant. Stop. लिख लिया? हवा में लिखा है? ठीक है, गुड गौरव जी। हवा वाला मैटर था मेन का जी, सीयर स्केल का शुरू हो गया है, खत्म वो 80 बोल बोल के। पहले जी आपने लिखा है? चलिए चलो ट्रांसक्राइब कर लो। 8:33 मिनट है ना। चलिए 8:50 तक ज्वाइन कर लीजिएगा, 8:55 से मिलवाऊंगा, ठीक है।
और जो है कल भी ही टाइम चलेगी। चलिए अब आप लोग कर लीजिए, और जो न्यू है उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी प्रोसेस आप लोग खुद ही जानते हैं। चलिए, थैंक यू बस।